Hello everyone, and welcome to another episode of the We Rise Wellness Podcast. Today we have Dr. Preeti Batra with us. She is an entrepreneur, she is a coach, mentor, philanthropist. She also runs a network of women. She coaches them on mindset, clarity, and growth in business. Welcome, Preeti. So excited to have you today here. Thank you so much, Neetu. Thanks for that. Thanks, V Rise, for Unbelievable. inviting me. Unbelievable journey you have had, Preeti. I mean, from being a homemaker to being an entrepreneur, and then now empowering others into getting into business and helping them with their growth. So what is your story, Preeti, behind this entire transition? Okay. So, yeah. So this is something which is, it's a life journey which started with fat shaming in schools. I used to be an introvert, timid person, and it was really difficult for me to interact with anyone. But then, I learned the discipline of working on my body during that time when I got engaged. And after that, I actually dedicated my complete life in that time, around that time, my complete life to my family. And after, uh, in 2005, I finished my PhD. And after that, I was like, now what? So there was a vacuum which was created. Now what? And then God's grace, I'm blessed with 3 children. तो उसके बाद तो बिल्कुल लाइफ का एक फुल स्टॉप, करियर का फुल स्टॉप लग चुका था. और फिर मुझे भी लगा कि ठीक है यार, मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है फैमिली को, तो छोड़ देना चाहिए. लेकिन वो इच अंदर ही अंदर एक तरह से जो है ना, वो तंग करती थी उस टाइम पे, डिस्टर्ब करती थी कि यार क्यों, यू हैव डन पीएचडी इन ह्यूमन रिसोर्सेज, मोटिवेशन लीडरशिप आपका एक टॉपिक रह चुका है, why are you sitting here? So during that so-called null period, I started writing books, reading a lot, and then I started writing my own books also. 2 of my books are available online. One is The Lost Affair, that is on material relationships, and another one is Tryst with Divinity, that is on spiritual relationships. Okay, so these are stories or these are fictions? Fiction stories, and one of them is kind of a contrast reprogramming of my own life. Okay, sounds interesting. I think I'll have to go through and buy those books to read. Yeah, why I'm saying contrast reprogramming, because हम लोग ना जनरली मिरर प्रोग्रामिंग करते हैं. हमारा ब्रेन जनरली एक मिरर प्रोग्रामिंग करता है कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट हम वही चीजों को इमेजिन करते हैं. बट इन दिस बुक एक्चुअली आई क्रिएटेड इन माय इमेजिनेशन अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, जो मैं नहीं थी. सो फीमेल जो उसकी कैरेक्टर है, दैट वाज exactly opposite to what I was at that time. I get it. So that was the contrast. That husband was exactly opposite to my husband that I had at that time. The in-laws, the characters, everything was totally different. Imaginations, right? I mean, human mind has boundless imaginations. Absolutely. And the story went like that कि वो contrast reprogramming होने लगी, and actually वही सारी चीजें मेरी लाइफ में होनी शुरू हो गई. Yes, because you manifested it in your book. Perfectly. मुझे समझ ही नहीं आता ये वो हुआ कैसे. But it changed a lot. In my life, there were so many changes, like मेरा introvert होना खत्म हो गया. I had confidence in me. I wanted to talk to people. I wanted to express myself. Then एक बहुत बड़े जो है ना, बहुत सारे mental blocks थे, resistances थे. उन सबको break करने के लिए I took the help of Google University, YouTube University. मेरी बहुत हेल्प की एक्चुअली यूट्यूब ने. सो एवरी टाइम मुझे लगता था कि नहीं, ये चीज सीखनी है, यूट्यूब से सीखती थी. शीशे के आगे खड़े होकर अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करती थी. सो दैट वाज, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, एंड इन 2018, गॉड्स ग्रेस, I got the opportunity to teach as a visiting faculty only for 1.5 months. And that was in MIT University.
इट वॉज जस्ट बाय लक, आप कह सकते हो, कभी अप्लाई नहीं किया था. somebody had to leave, तो उनको किसी को छोड़ के जाना था, तो she recommended के ठीक है, for 1.5 months आई एम रिप्लेसिंग, आई मीन शी कैन रिप्लेस मी. गॉड्स ग्रेस, वो काम जो है 1.5 महीने के अंदर जो खत्म किया मैंने. सो स्टूडेंट्स दे वर सो एक्साइटेड, दे टोल्ड देम कि हमको यही टीचर वापस चाहिए. so so that was the turning point of my life actually. I get So it. Wow, yeah. superb, superb. And the whole transformation journey began from there. Amazing. So tell us, Preeti, about this network of women that you are running. What is it about? And if somebody has to become a part of it, what prerequisites and what can be the expectations from there? Okay. So in 2020, it just happened because of COVID. This visiting faculty job was not there because cost cutting चल रही थी. और मुझे समझ में आया कि आई वॉज डैम स्केयर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में हर एक के लिए. सो आई थॉट कि जितनी भी विमेन लाइक मी हैं जो उस कोकून से निकल के अपना काम शुरू करती हैं, उनके कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी जब वो ये ट्राई करती होंगी. सो आई फिगर्ड इट आउट कि इसको हम कैसे कर सकते हैं. आई फिगर्ड इट आउट माई सेल्फ फ्रॉम माई, खुद के लिए किया पहले. आई टू कोचिंग फ्रॉम राजीव तलरेजा एंड डॉक्टर अमित पारेख, ऑन्टरप्रेन्योरल कोचिंग्स ली, कैसे कर सकते हैं उन सब चीजों के लिए. ऑटोमेशन सीखा. सब कुछ सीखने के बाद आई रियलाइज दैट आई शुड क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ सच वुमेन हु आर विलिंग टू बिगिन देयर जर्नी फ्रॉम दी होम मेकर. उनको निश क्लैरिटी देना, उनको स्टार्ट करवाना, वो सारी चीजें जो है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम पहुंच सकते हैं उस लेवल तक जिस लेवल पे मैं खुद पहुंच पाई. तो वो सारी चीजें उनको बताने के लिए आई स्टार्टेड दिस नेटवर्क. एंड एक्चुअली आई वाज नॉट नोइंग कि वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी दैट लोगों को मांगने पड़ते हैं टेस्टिमोनियल्स. मेरे बर्थडे पे मेरे पास मेरे टेस्टिमोनियल्स गिफ्ट के रूप में आए थे. Wow, so sweet. गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल वीडियो. Wow, so sweet, so sweet. I mean, that it's giving me goosebumps. So tell us, maybe a couple of stories of your mentees, who felt the impact from your coaching and mentoring. Okay. So one is Seema. She is teaching Kannada and Hindi, and she was so underconfident. She was not willing to speak up on camera. उसको तैयार करना was a job. कि भाई करो, you have to get into this space. अगर आपको कोचिंग में आना है तो वीडियो पे आके बोलना पड़ेगा. एंड नाउ उसके पास टाइम ही नहीं है. इवन हमारी ऑनलाइन नेटवर्किंग मीट्स के लिए भी वो कहती है कि मेरे को अपनी क्लासेस लेनी है, मुझे रिकॉर्डिंग्स करनी है. तो शी इज डूइंग हर वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, शी इज मेकिंग हर कोर्सेज ऑल्सो. तो उसको फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लोगो रजिस्ट्रेशन वी हेल्प्ड हर फ्रॉम बिगिनिंग. तो Yeah. उसका जो है, yeah. I think, I mean, people are opening up to this mentoring and coaching now because they have understood the value of somebody giving that push, somebody, trying to pull you out from your comfort zone and helping you fly. So I think you are doing a great job over there, letting women fly. Kudos. I mean, really, really appreciate your efforts. So tell me, Preeti, I mean, what is that one big problem that you see right now with women entrepreneurs, because you handle them every day, that they have to face in everyday life, and what would be your advice to them so that they can come out of their cocoon and fly? Yeah. So I feel that that daily discipline is very, very important because you have taken a business and the business is just like a small baby. It's your baby. You have to take care of your baby. अभी क्या है कि मॉर्निंग में आप उठ रहे हो, आप अपने रूटीन्स फॉलो कर रहे हो, एंड देन आप उस चीज को, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को छोड़ रहे. यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. व्हाई? बिकॉज वो काम शायद आपको पसंद नहीं है, और इंस्टेड यू आर डूइंग कीप डूइंग द सेम थिंग्स विच आर नॉट गिविंग यू रिजल्ट्स. So my concern is that women entrepreneurs must learn the right way of doing it. So probably वही wrong habits के साथ काम करने से they are not getting the results. So उनको ठीक करना is very very important. They keep on posting. यार हम खुद नहीं देखते किसी के पोस्ट यार. As a consumer, आप किसी के पोस्ट कितना लाइक करते हो?
आपका पोस्ट कोई क्यों देखेगा व्हाट्सएप के ऊपर इफ यू कीप पोस्टिंग द सेम स्टफ? नोबडी इज लाइकिंग इट. बट व्हाट टू पोस्ट, हाउ टू पोस्ट, किसको किससे काम लेना है, कितना काम लेना है, ये सारी चीजों के बारे में एग्जैक्टली यू शुड नो. बिकॉज इफ यू डोंट नो योर बिजनेस यू कैन नॉट ग्रो योर बिजनेस. एज सिंपल एज दैट. सो मुझे लगता है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दे मस्ट गेट इनटू दैट गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट हु कैन हेल्प देम कि आप ऐसे करके यहाँ से फिगर आउट करने के लिए जस्ट मूव लाइक दिस. बिकॉज आप नहीं तो हिट एंड ट्रायल के थ्रू चलते जाओगे, फिर से कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ेंगी, फिर घर पे बैठोगे, फिर हो नहीं पाएगा, then again you will again try, retry, and I think everybody needs a mentor. I mean, when it comes to me, the moment I realized the value of mentors and I started hiring them one by one for every area of my life. So I have mentors for my health and fitness, I have for my clarity, I have for business. So I mean, the entire paradigm shift happens. Once you have someone to guide you, give you the right mentoring and support you, and when you know that there is someone who understands you and you can always go back to ask questions. I mean, it's like in the back of your mind, even if you're doing right, it's like, okay, there is someone to support me, and I think this is my way, and you make your way then. So yes, the right support, I think, is very, very important in business. Great. So amazing talking to you, Preeti. Amazing impact that you are creating in women's life. I'm so inspired by you. Any closing thoughts that you have and you want us to leave with? love yourself. Dear women entrepreneurs, just love yourself. Even if you're not into business, just love yourself. Because you can improve your relationship with others only when you love yourself. तो एज अ क्लोजिंग थॉट मैंने अपना एक छोटी सी पोएम लिखी हुई है, वो आई जस्ट शेयर इट विद यू. तेरी राह तो बस तेरी चाह चाहे, तेरी राह तो बस तेरी चाह चाहे, आजादी तेरी चिर परिचित है तुझसे, इन बंधनों में फिर उलझी है काहे, इन बंधनों में फिर उलझी है काहे, कहीं खुद ही तो नहीं तू अपनी ही उलझन, कहीं खुद ही तो नहीं तू अपनी ही उलझन, क्यों ढूंढती है कि कोई तुझे आकर सराहे, क्यों ढूंढती है कि कोई तुझे आकर सराहे, पूर्णता से न रहे अनभिज्ञ, मानकर खुद को अपूर्ण, पूर्णता से न रहे अनभिज्ञ, मानकर खुद को अपूर्ण, स्त्री बन अपनी स्वामिनी बिन तरस खाए, स्त्री बन अपनी स्वामिनी बिन तरस खाए. Thank you. Superb, superb. So amazing, Preeti. I mean, I'm getting goosebumps. Thank you so much for sharing this poem. And thank you so much for coming to this show. I'm sure the viewers will, have huge takeaways from this episode, and they'll be able to reach out to you. And I think the social media handles would go with this podcast. And anybody who wants to connect with Preeti, please do so. Thank you so much, Preeti, once again. Really, really humbled and obliged. Thanks a lot.